बीच में एक कॉल आ जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो फिर मैं उसको यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन से पर दोबारा पढ़ देता हूँ। Demonetization was a new initiative taken by the Government of India on November 8, 2016 to tackle the problem of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the economy. Old currency notes of 500 and 1000 were no longer legal tender. New currency notes in the denomination of rupees 500 2000 were launched. Positive impacts: it improves the tax compliance. Savings were channelized into the formal financial system. It put a curb on the black money and tax evasion. It helps in the shifting cash transactions into electronic payment technologies. GST यहाँ ये यहाँ से छूट गया था. GST, one nation, one direct tax, one market. Goods and services tax in the single comprehensive indirect tax on supply of goods and services, right from the manufacturer, service providers to the consumer. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी जिसको कहते हैं इज द सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर / सर्विस प्रोवाइडर्स टू द कंज्यूमर. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री with one rate for one type of goods and services. Under GST, there are 6 standard rates applied, that is 0%, 3%, 5%, 12%, 18% and 28%. 3, 0, 3, 5, 12, 18, 28 on supply of all goods and services across the country. It has amalgamated a large number of taxes and cess on production / sale of goods or provisions of services levied by the central and state union governments. For example, central excise duty, central sales tax, value added tax, etc. have been subsumed in GST. Okay. Impacts of GST on the Indian economy. इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट जीएसटी का? Impacts of GST on the Indian economy. GST has simplified the multiplicity of taxes on goods and services. It reduced the cost of business operations and overall cost of production, which made Indian products services more competitive in the domestic and international markets. It will also result into a higher economic growth as GDP is expected to rise by about 2%. 2% GST की वजह से 2% इजाफा होने था. GST has simplified the multiplicity of taxes on goods and services. It reduced the cost of business operations and the overall cost of production. It also result into the higher economic growth as GDP is expected to rise by 2%. तो ये हमारा था जो रिवीजन वर्क था, फास्ट रीडिंग रिवीजन वर्क के द्वारा. अब हम जो हमारे जो ब्राइट लेट ब्लूमर्स हैं उनके लिए इसको मैं रीड आउट नहीं करूँगा. इसका इससे बुलेट पॉइंट्स जो हैं इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसको बुलेट पॉइंट से ये लास्ट मोमेंट ये हमारा लेट ब्लूमर्स के लिए बुलेट पॉइंट्स के रूप में दिए हुए हैं. और मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं सारा इंडियन इकोनॉमी कवर कर लूँ, क्योंकि अभी अकाउंट्स के बोर्ड के एग्ज़ाम चलेंगे और इसके बाद तब फिर हमारा इकोनॉमिक्स होगा. तो जब तक अकाउंट्स के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक मैं सारा कवर कर लूँ, सारा वीडियो बना दूँ, ताकि बच्चों को एक, अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं उनको कुछ फ़ायदा हो. फास्ट रीडिंग केवल चला के सुन भी लेंगे ना तो उनको बहुत फ़ायदा होगा. फास्ट रीडिंग है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मेरा टारगेट.